नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुशाल कुमार। आज हम अनबॉक्स करेंगे पाईमेट्रिक्स की तरफ से आने वाला ड्रेको नामक टेलीस्कोप। आप देख सकते हैं ये डब्बा जस्ट अभी अभी आया है और हम इसे अनबॉक्स करने जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, जो हम आपको नहीं दिखा सकते ऑब्वियसली फॉर प्राइवेसी रीजंस। तो यहाँ पे बहुत कुछ मुझे दिख रहा है। सबसे पहले छोटे वाले को उठाते हैं। ये एक वारंटी एंड सपोर्ट कार्ड फ्रॉम पाईमेट्रिक्स। पीछे स्कैन करने के लिए क्यूआर भी है और टोल फ्री नंबर भी है। सेकंड, एक सेलेस्टियल कैलेंडर जिसमें हम ये देख सकते हैं कि इस साल कौन कौन से सारे इवेंट्स होने वाले हैं। एंड इट सेज स्काई इज नॉट द लिमिट, सेलेस्टियल कैलेंडर 2025। सेकंड, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टार गेजिंग, दिस इज प्लैनिस्फीयर। दिस इज समथिंग न्यू, मैंने पुराने वीडियोस में भी इसको नहीं देखा है। ओके, मैं जानता हूँ ये क्या है। दिस इज समथिंग, आप डेट एडजस्ट करोगे तो इट विल टेल यू कि कौन सा कॉन्स्टिलेशन या फिर स्टार उस पर्टिकुलर डे को कहाँ पे है। विल लर्न हाउ टू यूज दिस। और ये पीछे, कीपिंग दिस असाइड, लेट्स कम टू द मेन बॉय। So you have a travel case included. Okay, मैंने जो बाकी अनबॉक्सिंग वीडियोस देखी है उसमें ट्रैवल केस के अंदर ये लोग टेलीस्कोप देते हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि ट्रैवल केस अलग से दिया है। कीपिंग इट असाइड। ओके, हाँ, ये शायद वो सेंटर में ट्रे स्टैंड है जिसमें यू कैन सी 3 होल्स जस्ट टू कीप द लेंसेज। एक और आई गेस ये मैनुअल है हमारे टेलीस्कोप का, एंड दिस इज समथिंग like what our telescope should look like. Okay, so box में 1, 2, 3 and 4, कैमरामैन यहाँ फोकस करें। एक छोटा सा white कलर का बॉक्स है। We'll start with this. So this is our phone adapter. Okay, so आप यहाँ phone attach करोगे and this somehow we'll figure it out later on. Somehow it sticks on your telescope and you get to record all what you're seeing. So this is our OTA. I think this is the main body of our telescope. Get this out first. Whoa, this is long. This is the eyepiece and this is the dust. तो जब आप इसको ऑनलाइन देखते हो तो यू फील लाइक ये डार्क कलर का होगा, बट इट्स नॉट ब्लैक, इट्स डार्क ब्लू और नेवी ब्लू। Okay, never look directly or near the sun through the telescope lens at time. If you are a telescope geek, you must be knowing that you don't have to see the sun without the sun protector. It can damage your eyes permanently. Being a doctor, that will be a permanent damage. Keeping it aside, there we have our tripod.
have a accessory box inside it too. This is a bulky, it's quite heavy. It's quite heavy. This is our tripod stand. I think I need to. Okay, I think we don't have to assemble it. It's already assembled. Oh, this is quite tall and it even have extensions, I guess. Yeah, it has extensions. So, I'm 6 feet and it's something coming closer to my chest. And on the top you can see this leveler, I guess, so that you can are you on a level ground or not? This green guy, level bubble in center. Pack it first. This is not like your regular mobile phone tripod holder. It seems to be durable. Coming to last, I guess this is the accessory. We'll be needing to put something in our tripod to make it more stable. Okay, no. These are our lenses. These are our lenses. Okay, so this is the red dot finder. You attach it over the telescope and it helps you focus on any distance object. This is how it looks. Please remove before use. I'll wait for the instructor to remove this. We have our lenses. Okay, so this is 20 mm. I think the maximum magnification will be from this one. And this is the Barlow lens. Now we have a tracker mount. This thing is new to me as well. Okay, so this is your azimuth mount. It will be connecting the tripod with the main cylinder, this one. We all know that objects move in space. Nothing is stationary at all. So when you focus on an object, it keeps on moving. So these are the micro adjustments. It will be attached on the left and the right, and when you rotate them, the telescope follows the moving object. That's it from my side. That was Kushad Kumar unboxing Pimatrix Draco. Hope I'll have a great time with it. Enjoy. Bye-bye.